बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सैयद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर है हमारा टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी के पास पेपर्स का, जो कि हमारे एफपीएससी लेक्चरशिप के, इंग्लिश लेक्चरशिप के या बाकी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने 52 एमसीक्यूज जो है कवर किए थे, और आज हम 53 से लेके नेक्स्ट जितने भी हमारे पास हुआ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन जो है उसके कितने सब ग्रुप्स हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसके 6 सब ग्रुप्स हैं। ओके, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़, लोएस्ट लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन का लर्निंग में वो कौन सा है? वो है नॉलेज हमारे पास। ठीक है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़, हाईएस्ट लेवल जो है हिरार्किकल, वो हमारे पास है इवेल्युएशन, उसका नाम है। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन इज़, राइट सीक्वेंस अगर बात की जाए तो लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन ठीक है, जिसमें देखिए नॉलेज एंड है, इवेल्युएशन, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन जो है वो लास्ट पे है। तो हम डिस्कस करते हैं इसे। फर्स्ट वन हमारे पास नॉलेज, फिर हमारे पास कंप्रीहेंशन आएगा, हिरार्किकल लेवल में एप्लीकेशन आएगा, सिंथेसिस एनालिसिस आएगा, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। फिर हमारे पास है नोइंग और मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद, इनका ताल्लुक जो है वो किस चीज़ से होता है? इनका ताल्लुक है नॉलेज से। टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज, टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल जो है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कंप्रीहेंशन। टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज़ कॉल्ड, यानी आप अपना प्रीवियस जो आपने नॉलेज लर्न किया है, कोई चीज़ आपने लर्न की है, उस मटेरियल को आप न्यू सिचुएशन में यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को हम, इस टर्म को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इंटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is, and that is called analysis. To put ideas together to form a new whole is called synthesis, यानी to put ideas together, एक नया whole बनाने के लिए, that is called synthesis. To know the worth or value of material is, यानी किसी चीज़ की, किसी मटेरियल की वैल्यू या वर्थ को जानना, ठीक है, उसकी पहचान करना, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड होती हैं दैट बाय कॉग्निटिव डोमेन। एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं बाय अफेक्टिव डोमेन से। नेक्स्ट है हमारे पास विच डोमेन इज़ कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, हमारे पास कौन सी ऐसी डोमेन है जो कि फिजिकल और मोटर स्किल से कंसर्न करती है? दैट इज़ कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़, फोकस जो है कॉग्निटिव डोमेन का वो किस चीज़ पर है? दैट इज़ ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल्स। द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, अफेक्टिव डोमेन जो है क्लासीफाई किया था किसने? दैट वाज क्राथवोल। अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू, अफेक्टिव डोमेन जो है वो डिवाइड होती है कितने ग्रुप्स में? मजीद 5 सब ग्रुप्स में। ओके, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज, अफेक्टिव डोमेन का जो लोएस्ट लेवल है दैट इज अटेंडिंग, विच इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, जो हाईएस्ट लेवल है हमारे पास वो है कैरेक्टराइजेशन। राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज, राइट ऑर्डर जो है इसका लास्ट वन ऑप्शन है अटेंडिंग, देन रिस्पॉन्डिंग आएगा, उसके बाद हमारे पास वैल्यूइंग है, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिना इज, दैट इज अटेंडिंग और रिसीविंग। Which subgroup of affective domain focuses on active participation in, that is responding. Bringing together different values into a consistent value system is, that is organization. Affective domain focuses on adoption of a value system as a part of lifestyle in, किस चीज़ में? That is characterization. साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन, साइकोमोटर डोमेन जो है वो क्लासिफाइड किया था बाय सिम्पसन ने, और कब? दैट इज द डेटेड इज 1972। अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्राथवोल इन, उसने सब ग्रुप्स में कब डिवाइड किया था? दैट डेट वाज 1964। साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन, साइकोमोटर डोमेन जो है उसे सिम्पसन ने डिवाइड किया था, और कब और कितने ग्रुप्स में किया था? 7 सब ग्रुप्स में। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इज, दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स सॉर्ट रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन, ओरिजिनेशन। याद रखिएगा साइकोमोटर डोमेन की कितने सब ग्रुप्स हैं? 7 सब ग्रुप्स हैं। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स सॉर्ट रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज, दैट इज स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टली। Bring together scientific ideas to form a unique idea is,
एक यूनिक आइडिया बनाने के लिए साइंटिफिक आइडियाज़ को इकट्ठा करना, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, विच इज़ वास्ट इन स्कोप। इनमें से किस चीज़ का स्कोप जो है वो ज़्यादा है, वास्ट है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, दैट इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी। Students find or explore the informations themselves in discovery method. टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। टीचर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है। लेक्चर मेथड में नहीं हो सकता, क्योंकि लेक्चर में लेक्चर डिलीवर कर सकता है, ठीक है। डिस्कवरी मेथड में नहीं हो सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं हो सकता, दैट इज बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। रोल ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिव इज, एंड दैट इज डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड एंड इंक्वायरी मेथड, ऑल अबव सब में होता है, ठीक है। माइक्रो टीचर इज अ टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक। वट इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग, यानी टाइम जो है, सॉरी, वट इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग, टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज़ 5 to 10 मिनट, ओके। एंड वट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट्स की तादाद 5 to 10 होती है। माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन, माइक्रो टीचिंग को कब स्टार्ट किया गया था, 1960 में। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कम्पिटेंसी ओवर or skills which is more suitable in teaching of science, that is project method, but it is based on demonstration method, okay. Which one is exception, that is TV, which is not included in print media, print media में कौन सी चीज़ है जो include नहीं होती, books, magazine, diagrams, TV. How many senses a person uses while observing film, that is 2, hearing and seeing. How much knowledge is gained through the sense of seeing, 75%. How much knowledge is gained through the sense of listening, that is 13%. Listening से. How much knowledge is gained through the sense of touch, that is 6%. How much knowledge is gained through the sense of smell, that is 3%. And how much knowledge is gained through the sense of taste, that is 3%. According to W. Thaber, types of models are, model की कितनी types हैं, that are 3. Mock-up models are those which explain principles of working of machine. A field trip is arranged for, field trip जो है किस लिए arrange किया जाता है, that is all of these, making an excursion, see other people doing things, note the meaning of action. Interest can be created in students in specific topics of study by the use of all of the above. Chalkboard, Felaline, bulletin board. The most direct experience from the following is that of field trip. What is true about science textbook, that is our teachers take textbook as curriculum. Which one is a standard for demonstration method, that is demonstration should be pre-tested to remove the weakness in demonstration. RAG has suggested how many members of students in micro teaching class. RAG ने कितने students टेस्ट किए थे, 5 to 10, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। What is the merits of micro teaching? Micro teaching का merits क्या है? That is all of the above. First one हमारे पास feedback helps in the improvement of method of teaching. Due to shortage of time, you divide the lesson plan into small units and thus gain mastery over the content. It helps in self-evaluation and teacher build up confidence in them. Method is based on the facts that students learn association, activity and cooperation is known as project method. Exhibition of science fairs promote students ability of, क्या प्रमोट करता है स्टूडेंट की कौन सी एबिलिटी को, दैट इज कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन. द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन, साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट फोकस है वो किस चीज़ पर है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ लॉ थ्योरी. What is the first step in the project method of teaching, that is distribution of work. Which one is not the psychological principle of teaching, that is proceed from complex to simple. Which is the second step in the problem solving method, that is formulation of hypothesis. Which is the best method of teaching science at school level, that is demonstration. Which is not the step of scientific method, that is interview. The ultimate result of scientific method is development of knowledge. Aims जो है वो national expectations कहलाए जाते हैं. Goals जो हैं वो subject level पे होते हैं. Objectives are at national level. To promote science and technology is, साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना क्या है, दैट इज एम. टू प्रमोट कंप्यूटर एजुकेशन इज, कंप्यूटर एजुकेशन को प्रमोट करना एक गोल है. टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज, आइडेंटिफाई करना पार्ट्स कंप्यूटर के, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स, दैट इंडिकेट्स नॉलेज. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.